जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। एंड बिफोर वी स्टार्ट, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सो वी वर डिस्कसिंग साइंस घटनाचक्र एंड वी आर स्टार्टिंग इन टू द नेक्स्ट phase of this घटनाचक्र, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस घटनाचक्र, दैट इज़ केमिस्ट्री। फिजिक्स तक हमने डिस्कस कर लिया है और इसके अलावा वी आर डिस्कसिंग पॉलिटी इन द इवनिंग एंड वी हैव 4 प्लेलिस्ट of Ghatnachakra available in the channel, that is history, economics, ecology and geography, and one playlist of current affairs is also available, that is आई दृष्टि घटना चक्र, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी स्टार्ट करना है हिंदी, एज आई आस्क्ड यू ऑल। सो आपका कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिला एंड बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट ऑल्सो 3 वीडियोज़ नहीं आ पा रहे हैं। ऑल्दो अगर मोटिवेशन होता है कि आपकी तरफ से भी जो मोटिवेशन पहले बहुत अच्छे से आया था वो होता है तो 3 भी चल जाते हैं, बिकॉज मैंने एक दिन में 3 वीडियोज़ भी पोस्ट किए थे। सो वो भी नहीं आ रहा है, एक वो भी लैकिंग फैक्टर है विच आई एम सपोजिडली ऑन अ सेटबैक कि वाई इट इज़ नॉट कमिंग, बट एनी वेज विल कंटिन्यू डूइंग। जो हम कर रहे हैं वो तो करना ही है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड अबाउट दिस कि ये हम कंप्लीट करेंगे। सो कमिंग टू द, अगर देखिए किसी एक को भी हेल्प हो रही है तो वो भी बहुत है, बट ऑब्वियसली जब व्हेन यू डू समथिंग यू नीड मोटिवेशन एंड दैट इज़ यू, फॉर मी एटलीस्ट। ठीक, आप जो भी लोग देख रहे हैं वही मेरे लिए मोटिवेशंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी, ओके, हियर इज द क्वेश्चन मैम। Who is regarded as the father of modern chemistry? Modern chemistry के जनक किसको बोला जाता है? Who is regarded as the father of modern chemistry? So father of modern chemistry is Lavoisier. ठीक है, French nobleman and chemist Antoine Lavoisier is regarded as the father of modern chemistry. He is most noted for his discovery of the role of oxygen plays in combustion. He recognized and named oxygen 1778 and hydrogen 1783. Wrote the first extensive list of elements and helped to reform chemical nomenclature. The positively charged part at the center of an atom is called as, so it is called as nucleus. The positively charged part at the center of an atom is called nucleus. The atomic nucleus is a small dense region consisting of proton and neutron at the center of an atom. Constituents of atomic nucleus are, so constituents are proton and neutron. जो एटॉमिक न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। और ये आसपास किससे सराउंडेड होते हैं? इलेक्ट्रॉन से। Which of the following statement about molecular structure is correct? Neutron and electron are found inside the nucleus and protons revolves around it. नहीं, अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन करते हैं। Electron and proton are inside? No. Proton and neutron are inside the nucleus and electrons revolve around the nucleus. This is correct. Which of the following is not a part of an atom? Atom का part कौन सा नहीं है? देखिए, photon is not a part of an atom. Proton, electron, neutron, जिसमें proton और neutron अंदर होते हैं, electron revolve करते हैं. But photon is associated with light energy and also known as energy packet of the light. A single type of atom is found in. Single type of atom किस में मिलता है? Native elements में मिलता है. Native element is a material that consists of a single type of atom, which while a compound consists of 2 or more types of atoms. The atomic nucleus was discovered by, so it was discovered by Rutherford. The nucleus is very dense region consisting of protons and neutrons at the center of an atom. ये डिस्कवर हुआ था 1911 में, 1911, as a result of Ernst Rutherford interpretation of 1909 Geiger-Marsden gold foil experiment. The proton-neutron model of the nucleus was proposed by Dmitry Ivanenko, 1932. In atom, neutron was discovered by Chadwick. So neutron is a neutral particle which has no electrical charge. It was discovered by Chadwick in 1932. He discovered that when beryllium or other atoms are bombarded with high-speed particles, then electrically neutral particles emerges from these atoms and such neutral particles are known as neutrons. Which of the following is not a subatomic particle?
सो सब एटॉमिक पार्टिकल इसमें से ड्यूट्रॉन नहीं है. द पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर देन एटम्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. थ्री मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एक एटम फॉर्म करते हैं वो हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ड्यूट्रॉन कंटेन्स अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन. Which of the following pairs constitutes particle antiparticle pair? Particle antiparticle pair बनाते हैं इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. So position or positron or anti-electron is an antiparticle or antimatter counterpart of an electron. Positron has a positive electric charge and has the same mass as an electron. Match list 1 with list 2. List 1 में characteristics हैं, list 2 में particles हैं. Zero mass, fractional charge, fractional spin, integral spin. So देखिए zero mass तो हो जाएगा न्यूट्रिनो का. देन फ्रैक्शनल चार्ज ये क्वार्क में आ जाएगा. फ्रैक्शनल स्पिन हो जाएगी पॉजिट्रॉन एंड इंटीग्रल स्पिन इज फोनॉन. So positron has a positive electric charge and has the same mass and a spin of half as an electron. Quarks combine to form composite proton particles called hadrons. The most stable to form composite particles called the most stable of which are protons and neutrons, and the components of which are protons and neutrons. Components of atomic nuclei, they have fractional charge of plus 2 by 3 e or minus 1 by 3 e. Neutrons are subatomic particles produced by the decay of radioactive elements and are elementary particles that lack an electric charge and a very small mass, which might even be zero. Phonon in condensed matter physics is a unit of vibrational energy which arises from oscillating atoms and one second विदिन अ क्रिस्टल. तो ये किससे होते हैं? ऑसिलेटिंग एटम्स जो क्रिस्टल के अंदर ही होते हैं उससे अराइज होती है. फोनॉन इज डेफिनेट डिस्क्रीट यूनिट और क्वांटम ऑफ वाइब्रेशनल मैकेनिक एनर्जी, just as photon in a quantum of electromagnetic or light energy. So phonon has an integral spin like photon. Which one is a fundamental particle? Neutron, proton, pi meson या quark. So quark जो है वो एक fundamental particle है. In particle physics, an elementary particle or fundamental particle is a subatomic particle with no substructure, thus not composed of other particles. Particles currently thought to be elementary include the fundamental fermion, quark, leptons, antiquark, antileptons, as well as fundamental bosons. Higgs boson are also known as, so they are also known as God particles. The Higgs boson is a fundamental particle associated with the Higgs field, a field that gives mass to other fundamental particles such as electrons and quarks. In the mainstream media, the Higgs boson has been called the God particle from 1993 book The God Particle by Nobel laureate Leon Lederman. Muke discussed God particle is, that is Higgs boson. So Higgs boson is an elementary particle in the standard model of particle physics. The hypothesis of its existence was given in 1964, but practically it was proved on March 14, 2013. In mainstream media, the Higgs boson basically been called the God particle, and the two physicists who discovered these particles, Peter Higgs and Francois Englert, were awarded the Nobel Prize in Physics in 2013 for finding this God particle. All right. Next is God particle is, so that is Higgs boson. is because in 2013 एक नई डिस्कवरी फिर से होती है, इसलिए क्वेश्चन बहुत बार आया था, रिपीट हुआ था. सो बेसिकली इस वजह से दिस हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर सेवरल टाइम्स. Next, the efforts to detect the existence of Higgs boson particle have become quite frequent in news in recent past.
What is or are the importance of discovering this? So it will help us to understand as to why elementary particles have mass. It will enable us in the near future to develop the technology to transfer matter from one point to another without traversing the physical space between them. It will enable us to create better fuel for nuclear fission. So इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है. इस इन दिस यूनिवर्स ऑल द विजिबल थिंग्स आर बेसिकली अगर आप देखो इन दिस यूनिवर्स all the visible things are made of matter and molecule. The mass is that physical property of particle which gives them solid structural form. तो mass क्या होता है? वो physical property होती है particle की जो उनको एक solid structure provide करती है. The study of this field is important to know that why some fundamental particles have mass. So the discovery of Higgs boson is important to understand this fact. Which particle is free of charge? Neutron is free of charge. Among the given particles, neutron is free of charge. Alpha particle plus 2ve plus and proton plus positive are positive charged particles, while electron carries negative charge. Which of the following particles has zero charge? Neutrino. Neutrino is a subatomic particle that is very similar to an electron but has no electrical charge. And a very small mass which might even be zero. Neutrinos are one of the most abundant particles in the universe because they have very little interaction with matter. However, they are incredibly difficult to detect. The alpha particle carries two positive charges. Its mass is very nearly equal to 2 protons. Nucleus of an atom of helium, sum of the masses of 2 positrons and 2 neutrons. 2 positrons as each positron carries a single positive charge. तो देखिए ये हो जाएगा equals to the mass of 2 protons basically. ठीक है. The nucleus of an helium has helium के nucleus में क्या होता है? 2 protons होते हैं, 2 neutrons होते हैं. 2 protons and 2 neutrons. Which of the following elements does not contain neutrons? So hydrogen does not contain neutrons. The atomic number of hydrogen is 1. Protium 1H1 isotope of hydrogen has no neutron, while deuterium 1H2 has 1 neutron and tritium has isotope has 2 neutrons. Which of the following carries a negative charge? Beta particles carries a negative charge. So alpha rays or alpha particles are positively charged particles. Beta particles are highly energetic electrons which are released from the inner part of the nucleus. And ये क्या होते हैं? ये negatively charged होते हैं and have a negligible mass. Gamma radiation में photons होते हैं which travel at the speed of light like electromagnetic radiations. A ray has no mass or charge. ray में कोई ना mass होता है ना charge होता है. Gamma radiation travel कर सकती है at much faster speed in the air than alpha and beta. In an atom, the order of filling up of orbitals is governed by, so it is governed by Aufbau principle. The Aufbau principle is used to determine the electron configuration of an atom, molecule or ion. Principle postulates a hypothetical process in which an atom is built up by progressively adding electrons. As they are added, they assume their most stable condition with respect to the nucleus and those electrons already there. According to the principle, electrons fill orbitals starting at the lowest available energy level before filling higher levels. Example, 1s is filled before 2s. ठीक है. तो अवॉइड प्रिंसिपल क्या होता है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन के आप शेल्स फिल कर रहे होते हो 1s 2s तो आप इस मैटर में आप फिल करते हो तो पहले छोटा भरा जाएगा फिर बड़ा भरा जाएगा. सो बेसिकली इस तरीके से अवॉइड प्रिंसिपल से यूज़ होता है. Regarding the atom of an chemical element, the magnetic quantum number refers to the orientation. In atomic physics, the magnetic quantum number is the third set of quantum numbers. Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. Now these describe basically the unique quantum state of an electron and its orientation. It is designated by letter M. The magnetic quantum number denotes the energy level available within a subshell. This number yields the projection of the angular momentum corresponding to the orbital along a given axis. The principal quantum number describes the electron shell or energy level of an electron.
Azimuthal quantum number describes the shape of a given orbital, while the spin quantum number describes the spin of the electron within that orbital. The number of electrons and neutrons in an element is 18 and 20. तो इसका मास नंबर कितना होगा? तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब वो भी हो जाएंगे 18, और न्यूट्रॉन्स कितने? 20 हैं. सो मास नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज 18 प्लस 20, 38. ऑलराइट, नेक्स्ट. What is the mass number of an element, the atom of which contains 2 protons, 2 neutrons and 2 electrons? तो ये हो जाएगा 4. Mass number of an element is the sum of a total number of protons and neutrons inside in its nucleus and represent by A. So mass number हो जाएगा A. A is equal to number of protons plus number of neutrons. Therefore mass number is equal to 2 plus 2 equals to 4. Next is the number of neutrons in the nucleus of plutonium is 94 to 42. तो ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे. तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे अब. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे आपके 242, जो कि आपको दिया हुआ है 242, ठीक है, और 94 इसका, इसमें से आप माइनस कर दोगे. बेसिकली आपका न्यूट्रॉन्स का नंबर है, जो टोटल मास नंबर 242 है, न्यूट्रॉन्स माइनस किया आपने तो क्या आ गया 148. क्लियर. द एटम्स इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट, इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं आइसोटोप्स. Isotopes are those atoms of the same element which have atomic mass is different but atomic number is same. Isotopes is that nuclei of an atomic nuclei in which number of protons is same but number of neutrons is different. ठीक है, number of protons तो same होते हैं but number of neutrons अलग हो जाते हैं, वो बोले जाते हैं isotopes. The isoneutronic group is in the following is. Isoneutronic group कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा C614 N15 O16. रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, और ये कैसे आइसोन्यूट्रॉनिक कैसे बोला है कि भाई आप इनमें से जब भी इनको माइनस करोगे 16 में से 8 8, 15 में से 7 8, तो न्यूट्रॉन सेम हो रहे हैं इनके, तो ये आइसोन्यूट्रॉनिक हो गए. Radioactivity is measured by Geiger counter. So Geiger-Müller counter, also known as Geiger counter, is an instrument used for detection and measurement of ionizing radiation. It detects radiation such as alpha particles, beta particles and gamma rays using the ionization produced in a Geiger-Müller tube, which gives its name to the instrument. तो इसी से instrument का नाम भी पड़ा है. Radioactivity was discovered by Becquerel. Radioactivity was discovered by Becquerel in 1896. किसके द्वारा? French scientist के द्वारा, Henry Becquerel, when he was working with phosphorescent material. ठीक है, सो रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की गई थी बैकरल के द्वारा. ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर. थोड़ा एक्चुअली आज पेन का इशू हो रहा था, इसलिए बीच में कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए हैं वीडियो में, बट एनीवेज वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री. नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट वुड बी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस सॉल्यूशन. ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर एंड डू रिवाइज everything well. Do take care of your health. Share the channel, subscribe the channel and like the video. All right. Jai Hind, Jai Bharat.